इस मॉड्यूल में हम ऑफियूराइड्स के अंदर फीडिंग और डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ऑफियूराइड्स जो है प्रीडेटर्स हैं, स्कैवेंजर्स भी हैं। यूजुअली ये अपने आर्म्स को और ट्यूब फीट को यूज़ करते हैं फॉर स्विमिंग मोशन टू कलेक्ट different kinds of prey that is present in the water and particulate matter, which is then captured and squeezed into the mouth of the animal. कुछ ओफियूराइड्स जो हैं इनको हम फिल्टर फीडर भी कह देते हैं because they normally wave their arms and trap planktons on mucus covered on the tube feet. अब जो ट्रैप प्लैंकटन है is passed from the tube feet along the length of the arm until it reaches the mouth. यानी कोई भी फूड पार्टिकल आपने किसी भी मेथड से लेना है एनिमल ने, that is normally pushed into the mouth that is present in the central disc. अब जो माउथ है it is present in the central disc और वहाँ से 5 ट्रायंगुलर जाज जो हैं दे आर रेडिएटिंग लीडिंग टू ईच आर्म, और ये जो जाज हैं दे नॉर्मली फॉर्म द च्यूइंग अपरेटस। व्हाटसोएवर फूड इज कैप्चर्ड ये उसको च्यू करेंगे, और च्यू करने के बाद माउथ जो है दिस लीड्स इनटू द सैक लाइक स्टमक। ईच आर्म इज हैविंग इट्स ओन स्टमक, देयर इज नो इंटेस्टाइन एंड नो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट extends into the arm. This is the ophiuroid cross section. These are the arms. This is the central disc. This is the madreporite, and this is the bursa, oral perihemal ring, gonads. This is the mouth through which food which is captured through this mouth. This will enter into the, this is the jaw plate. These jaw will act upon the food, break it down, chew and push it into the stomach, and inside the stomach digestion of food this will be takes place. And here in case of this ophiuroid, digestive system is only confined to the central disc.